But when it comes to monetizing the song, how to make more from the music that you are making, how to manage your rights, how to choose the right partners in the industry, it is very important for you to know what is the role of each of the stakeholders in the industry. So that is the reason for which we started My Music, My Rights. And today we are starting one more series from IPRS, which we will hold every month, the first week of every month, which will be the live session of My Music, My Right. Every month, we will bring you one expert on a topic that is of primary importance or very important for you to know. We know that all of you are making great music, but that is the creative aspect or the creative side of the music business or the music. But when you have to now monetize the music and you have to make, because end of the day, you want your song to be popular, you want the song to kind of get you more like royalties and earnings. Then there are a lot of other things that come into play and which you need to know. And one of the most important thing, which almost like most of the times go neglected, is the data. The data which is that goes with your song. Because today, as we always say in all our sessions, that today you don't have any physical evidence of your music. Gone are the days when you used to have cassette CDs. पहले जमाने में क्या होता था, आपके पास एक सीडी होता था, कैसेट होता था जिसमें आपका नाम लिखा होता था, and you can और आप वो and you used to take those to like places and people, you could go and buy it from a store. But today you don't have any physical copy of your song. Everything is on digital, everything is on the cloud. So then to protect your music and to make your music be kind of be discovered and to track the music to your earnings, the metadata plays a very important role. Agar metadata is wrong, then you will miss out big time on your music. Hence, today's session is very important where we will understand what is this metadata, what comes under a metadata, what are the important fields that are captured in a metadata, why metadata is today so important in the digital era of music. And for that, we have none other than Mr. Surhit Bhattacharyya. He is the Chief Information Officer at IPRS, and Surhit Bhattacharyya has been working relentlessly to kind of standardize the data in IPRS, because IPRS is an apex body. It's a very important body today, which is the melting pot of music and business, because this is where from the place where all your data rests. आप जब गाना बनाते हो, metadata with the song is with IPRS. So how to standardize the processes, standardize the data within IPRS, so that whenever your music is playing anywhere and royalty is being generated, you don't miss your monies like because of wrong metadata. And Mr. Surhit Bhattacharya is also working with in the industry, the policymakers, and the different stakeholders like the distributor and other like publishers to establish a streamlined process within the industry. Because today you are submitting data with IPRS, you're submitting data with your distributor, but then a lot of data is going back and forth. So how we can streamline this process, that is also important. So Surit is also playing a very big role in standardizing the data, not just in IPRS, but at the industry level. So today we have Mr. Bhattacharya, and we will try to understand as much possible from him on metadata. IPRS already holds regular training session, but those are just helping you to register your data or access the member portal. But today we will understand from Surhit Bhattacharya why it is important, why we are not leaving you to just register and go, and we are pushing you to understand metadata and register your work. So, Surhit, thank you for being with us today. And just to tell you, all of you, Mr. Bhattacharya had to rush to Delhi for some urgent work for our members. But this session is so important that he said, no, I will not postpone it. Let me connect with all creators from the airport. So today he's now at the airport and he's doing the session for us on the go. Thank you so much
for accommodating the session. And yes, today we will not leave you soon. Firstly, we would like to understand from you that we are now today registering data in multiple places. Metadata is so important. We always talk about metadata from IPRS. What exactly is metadata and why is metadata so important? And how does it impact the creator? And one more request is that we know nothing. We are not experts like you. So please help us understand like a layman. I'm profusely sorry that I kind of had to rush. In fact, right now at the Delhi airport, at the T3 terminal. So sometimes I might need to put off the video because my flight is also nearby. Um, and metadata, the concept of metadata is actually quite simple. What is metadata? Let's understand that. Uh, Let me just step out a little bit. Just give me a second. Just step out. Okay. So what is metadata? Metadata is actually a very simple thing. So when you have some song, any data, any information associated with that particular track is a metadata. So what are the examples of a metadata? The title of the track, authors, the name of the author, the name of the composers, the name of the publisher. Uh, when you are a creator, you also get something called an IPI number. Maybe Rupa will come back to that later also. What is an IPI, IFWC, and stuff like that. So when all these data comprises of the metadata, Rupa here asks many questions. Another point is why metadata is so important. So the song is a creation. It's a beautiful creation, what we enjoy. But then, how do we know who are the people behind this beautiful creation? You know, metadata allows you to establish that. Metadata tells you, okay, this is a beautiful song. This beautiful song has been created by so and so people. So and so people are stakeholders. I'm sorry if there is, some background noise coming in. I hope you all people can hear me. I'm sorry for that. But so these kind of stuff it becomes very important because this allows you to connect with your fan. As a creator, all of us would like to have a fan base. And how does the fan know that who's the creator? The metadata allows you to create with your fan base. So that is the reason I would say metadata is important. The monetization part comes secondary now. I'll talk about that. So suppose this particular track generates some revenue. How does that revenue flow? The effect of flowing that revenue back to you is through this metadata. So these are the pointers which says, okay, this particular track was created by so and so person, and this particular track, the credits for this particular track to go back to so and so person. So that is the reason I would say, you know, the creation does not really stop at creating the music, but as well as creating the metadata of the music, because that is what brings you the recognition. Rupa, does it kind of satisfy the queries that you had put forward? Rumpa, are you on mute? Because I cannot hear you. Sorry. हाँ. So अभी हमें जो पता चल रहा है सुरित सर कि आपने जो बताया अभी कि गाना जो आप बना रहे हो जब वो आपके डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहा है या जो भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है वहां पर जा रहा है या उनसे रॉयल्टी बन रहा है ये प्लेटफॉर्म्स को और ये जगह जो जहां पर भी आपके गाने का यूटिलाइज हो रहा है चल रहा है उनको गाने के उनको गाने के बारे में पता नहीं व्हाट उनके पास जो जा रहा है वो ये डेटा जा रहा है तो आपका नाम क्या है ऑथर कौन है लिरिसिस्ट कौन है कंपोजर कौन है इस गाने का ओनर कौन है ये सब ये मेटा डेटा में छुपा है तो जब देखोगे कि एक प्लेटफॉर्म में आप जब देखते हो उसके नीचे क्रेडिट्स आता है और ये क्रेडिट्स में काफी सारे नाम आते हैं और वहां पर वही चीज मेटा डेटा है तो आप जो मेटा डेटा जब आप देते हो डिस्ट्रीब्यूटर को वही डेटा वो क्रेडिट में आता है
और अगर वहां पर कुछ भी गलत है तो आपने जो गाना बनाया, पहले तो आपका क्रेडिट है कि आप इस गाने में हो, या ये गाना आपने लिखा है, ये गाना आपने कंपोज किया है, वो ही चला जाएगा। सो आपका क्रेडिट ही चला जाएगा अगर मेटा डेटा गलत है। अगर क्रेडिट नहीं है तो आपका रॉयल्टी भी आप तक नहीं पहुंचेगा। पैसा, अगर गाना वायरल भी हो गया, वो पैसा आप तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये डेटा को तो पता ही नहीं, ये प्लेटफॉर्म को पता ही नहीं, आईपीआरएस के जो बैकएंड टीम है या बैकएंड सेटअप है, उसको भी पता नहीं है कि आप हो इस गाने में। बिकॉज आप फिजिकली तो आप नहीं जा सकते, आपके कैसेट्स नहीं जा सकता, तो सब कुछ मेटा डेटा है यहाँ पर। इसलिए मेटा डेटा इतना इम्पोर्टेंट है। और सुरित सर, आपसे एक और क्वेश्चन अभी जो आई वांट टू आस्क यू इज दैट, आप जब गाना बना रहे हो, आप ये मेटा डेटा स्टूडियो में से लेके आप आपको डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहे हो। आप जब आईपीआरएस में ज्वाइन कर रहे हैं तो आप ये डेटा लेके आईपीआरएस का हमारा जो फॉर्मेट है वहां पर भी आप इसको सबमिट कर रहे हैं। तो इस डेटा के अंदर ऐसे कौन से फील्ड्स है जो बहुत जरूरी है और वो डेटा में होना ही चाहिए? इट हैज टू बी इन द मेटा डेटा, और अगर मिस हो जाएगा तो देयर विल बी बिग प्रॉब्लम। एंड द सेकंड थिंग इज दैट, हम जो डिस्ट्रीब्यूटर को जो डेटा देते हैं और आईपीआरएस को जो डेटा दे रहे हैं, क्या वो सेम डेटा है या उसमें कुछ अलग, अलग भी फील्ड्स है उसमें कुछ? Oh, that's a very, very important question, Rumpa. So, I had actually explained what metadata is. It is the information which is embedded in a particular track. Now, you will also understand that depending on the usage, there are different kind of usage of a particular data, and and depending on that particular usage, the metadata will vary from platform to platform. If you talk about aggregators and for IPRS. Okay. So let me give you a very small example. If you really look at it from the IPRS perspective, the mood of that particular song, is it like a rap? Is it meant for exercising? It is meant for dancing? Stuff like that. From the IPRS perspective, that's not important. However, if you want to submit that track, let us say to a Spotify, to a DSP for a particular use, that kind of tagging becomes extremely important. Because when the users are searching, they might say, I want dance music. If that particular tag is not given, obviously users will not get your track for the dancing. So from the depending on the purpose, it kind of differs. However, from if you only look from the IPRS perspective and the monetization perspective, you might dance, you might do whatever. End of the day, I need to know it's Roomba or the creator who has created that particular track, right? I need to know whom the money should go back. If you ask me what are the most important across any platform, across any DSPs, any copyright society, I would say the title of the song, the name of the creator, IPI number of the creator, the performers, the genre of the track. I mean, is it in whichever language it might be in? And these are the few of them. There are obviously other data points also, but we can, though those are more detailed. I don't think we need to discuss that at this point. But name, title, IPI numbers, those identifiers, and okay. See, I would also state something. Rumpa, it is very important. What I see every day nowadays, while I look at the data, is usually a song comprises of, let us say, a lyricist, a composer, and a publisher, right? Now, when a lyricist is submitting that track for monetization, it is important also to mention the name of the composer and as much details of the composer as available. Because otherwise, what happens? Yes, the song might get registered, but the person who collaborated with you in creation of that particular song gets missed out. So I think we need to take that little extra step forward to ensure that it's not only me but also my community benefits when I register this particular track. Yeah, over to you, Rumpi. तो एक चीज जो हमें पता चला कि अगर आप, हाँ,
जो डेटा आप एक डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहे हैं उसमें कुछ अलग चीजें आपको डालना पड़ता है कि आपका प्रॉपर प्लेलिस्टिंग हो या आपका जो गाना है वो प्रॉपर जॉनर में जाए। कि अगर ये डिवोशनल है और आपने उसमें डिवोशनल का टैग नहीं लगाया तो वो सर्च में डिफिकल्ट होता है, आपका सर्च ठीक से नहीं होगा, क्योंकि जब आपका स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे है या कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है तो उनको पता नहीं चलेगा कि इस गाने को किस कैटेगरी में डालना है। तो वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाता है जस्ट आपके गाने को थोड़ा और भी रीच बढ़ाने के लिए। पर आईपीआरएस में आपको वो सब उतना डालने का जरूरत नहीं है। पर कुछ फील्ड्स ऐसे भी होते हैं जो दोनों जगह ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आप जब गाने के टाइटल जब आप लिख रहे हो, अगर गाने के टाइटल गलत है, बिकॉज आप देखोगे कुछ कॉमन टाइटल भी होता है, तो आपको टाइटल और स्पेलिंग आप कैसे उसको स्पेल कर रहे हो टाइटल को, क्योंकि हमारे देश में एक बहुत बड़ा दिक्कत है कि हम लोग हिंदी को रोमन इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो उसका स्पेलिंग कई तरह से लिखे जाते हैं। तो वो टाइटल को ठीक से लिखना पड़ेगा और आप जिन जिन जगह पे दे रहे हैं वो सब जगह पे आपको सेम स्पेलिंग रखना जरूरी रखना जरूरी है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो सुरित सर ने बताया वो है आपके तरफ से थोड़ा प्रोएक्टिव एफर्ट। वो चीज क्या है कि आप जब मेटा डेटा भर रहे हैं तो आप खुद का डिटेल्स तो भर ही रहे हैं, आपका नाम, आपका रोल, आपका आईपीआई नंबर। पर अगर आप थोड़ा एफर्ट लेके वहां पर आपके साथ जो गाना बनाया है, अगर आप लिरिसिस्ट है तो आपके साथ कंपोजर कौन था, या अगर गाने में दो कंपोजर था या दो लिरिसिस्ट था, तो सिर्फ अपना डिटेल्स ना डाल के अगर आप उस शीट को और भी थोड़ा डिटेल में भरे और आपके साथ जो लोगों ने काम किया, आप अगर उनका भी डिटेल्स देंगे तो फिर ये डेटा कंप्लीट डेटा होगा। और इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि अगर कंप्लीट डेटा है तो उसका और एक बेनिफिट भी है। और जैसे आपको रॉयल्टी मिल रहा है तो आपके जो फेलो क्रिएटर्स आपके साथ जो काम किए हैं उनको भी फिर रॉयल्टी मिलेगा अगर आपका गाना पॉपुलर हुआ। यहाँ पर और एक चीज बताना बहुत जरूरी है कि आप जिस लेबल के साथ काम कर रहे हो, इंडिया में लेबल के पास ओनरशिप राइट्स होता है गाने का, तो वो पब्लिशर मेंबर होते हैं आईपीआरएस में। और काफी सारे आर्टिस्ट आज खुद के भी लेबल है या लेबल के साथ बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं। तो आप डेफिनेटली आपके लेबल को बताए, आपके पब्लिशर को बताए कि वो आईपीआरएस से जुड़े और डेटा सबमिट करें, क्योंकि इसका और एक बेनिफिट है कि अगर आपका लेबल ने डेटा सबमिट कर दिया आईपीआरएस में एज अ मेंबर, तो आपको करने का जरूरत नहीं है। तो आपको जो वो दिक्कत आता है ना कि मैं कैसे भरूं, मुझे पता नहीं, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, ये नहीं है, तो आप सिर्फ एक एक काम कीजिए, आप आपके लेबल या पब्लिशर को बोलिए कि आप प्लीज मेरे तरफ से गाना को सबमिट कर दीजिए। बिकॉज जब पब्लिशर डेटा सबमिट करेगा तो उसमें खुद का तो डिटेल्स आएगा ही, उसके साथ ऑथर का भी आएगा, कंपोजर को, हाँ, कंपोजर का भी डिटेल्स आ जाएगा। तो फिर आपको बार बार वो एक ही काम करने का जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ आईपीआरएस के मेंबर पोर्टल पे जाना है, जाके चेक करना है कि आपके गाने रजिस्टर हुआ है कि नहीं। और आप जब वो कंफर्म कर देंगे तो वो गाने आपके नाम से हो जाएगा या लिंक हो जाएगा। तो आप प्लीज आपके पब्लिशर्स को बोलिए, लेबल को बोलिए कि वो डेटा सबमिट करे, तो आपका फिर काम कम हो जाएगा, आधा हो जाएगा। दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सुरित सर, आप जो अभी जब हम लोग मेटा डेटा के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा जो मेटा डेटा फील्ड है उस पर काफी सारे टर्म्स चीजें आते हैं, जैसे आईएसआरसी, आईपीआई, देन एक है आईडब्ल्यूसी। तो अगर और एक होता है इसनी, तो आप अगर थोड़ा एक इजी तरीके से हमें समझाए कि ये सब चीजें है क्या और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। Sure. Then let us start with something called IPI. Acha, Rumpa, is it possible for me to put off the video for a time being, because on the airport there's a lot of background? Yeah. Yeah. Okay, sure. Thanks for that, Rumpa. Okay. So let's talk about IPI in the beginning. In all my seminars, I talk about IPI as your identity across the world.
If I take Aadhaar, for example, if you have an Aadhaar number and you approach any of the government agencies, that is your identity. Through that, government knows whom they are dealing with, right? Now, if you talk about IPI is the same. It's an identity provided by CSAC, which is the apex body for all the corporate societies in the world. They provide this identity for the author across the world. So, what does it mean? So, Rumpa, if you have an IPI, okay, and your IPI is usually given by one of those societies, and the same IPI will be carried over to across all societies. Just to be clear, which means if you have got an IPI from IPRS, you don't need to get another IPI, let us say from an APRA or from a Compass or from an PRS and stuff like that. It's the same number which carries everywhere. This is the advantage because even if your songs are playing, let's say there's a lot of Indians which is living in Barbados, in Caribbeans, right, West Indies. If your song is playing there and you only need to put the IPI number, and that's it. The monetization of that money, the credit of that particular track flows back to you. So for example, Rumpa, there might be many people with the name of, let's say, Ajay Sharma, right? So with that Ajay Sharma, the moment I put an IPI number, it becomes unique. So that Ajay Sharma, whose music is playing in Caribbean, in Trinidad, or Timbuktu for that matter, he will immediately get credited. That's IPI. From IPI, naturally we flow to something. From IPI, we naturally flow to something which we call the ISWC. The full name of ISWC is International Standards Works Code. Please remember this word works. What does it work mean? It is your creation. The composition that you have created, the music that you have created, that is the works. So again, ISWC is the standard which is provided by CSAC. So how do you get an ISWC? If you and your fellow composer both have an IPI number, you only need to submit that track to CSAC and CSAC will give an ISWC. So how does this ISWC help? The way I said, when you have an IPI and it kind of carries across the world, similarly, when this particular ISWC produced anywhere across the world, immediately it points to that particular track. So, Rumpa, you just mentioned, you might have, let's say, I Love You. There might be many I Love You songs, right, in the world, and these are all different songs. However, However, the moment it gets an ISWC number, that differentiates that this is one I Love You, and we have got another I Love You, and stuff like that. So ISWC plays that role. Till now, I have the works. But what do we listen to, Rumpa? We listen to recordings, right? So what else? This recording also has a unique identity. Each recording. So every time you record a song, ideally should get a separate unique identity. This is the ISRC. In what we call it, International Standard Recording Code. So earlier it was WOX, now RC is for recording. So if, for example, we have a song. So suppose you have something, you have sung a song in a recording studio, and you go out to a live function and you record that. These two will have different ISRCs. So these are identifiers you can understand in across the world. The moment you give an ISWC or an ISRC, immediately this allows the particular party to understand from where this is coming from, and the recognition, the credit, the monetization flows back to the creator, to the performer, to the record label, to the publisher. That is why these are very, very important parameters. We should be very serious about it, actually speaking, because those are an identity which carries you across the world. It's not only India. Again, I'm telling you, it is across the world. Thank you very much, Surhit sir. So एक चीज जो अभी समझ में आ रहा है, what you're understanding is that and we always say that the music business, ये जो song हम बनाते हैं, the song business is very interesting. Because आप जब कोई गाना बनाते हैं या when you're making a song, ये गाना आपको दो तरह से आपको पैसा दिलाता है. कैसा है?
जो गाना हम सुनते हैं, the song that we are listening to, that is the final, that is the master or the sound recording. As an artist, I think all of you know that it is a final thing. वो sound recording है. जो ये साउंड रिकॉर्डिंग आप आपके डिस्ट्रीब्यूटर को भेजते हैं, आपके एग्रीगेटर को भेजते हैं, एंड वो साउंड रिकॉर्डिंग वो सब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब पे वो रिलीज होता है. So this sound recording is the final output from the studio, which is Rumpa, can I come in for a second? Because you said something very important, and I think we need to kind of highlight that. In fact, today, when you send your sound recording to a distributor to be uploaded to a DSP, let's say a Facebook, a Spotify, and stuff like that, they are going to ask you for this metadata identifier. You cannot load your tracks into a Spotify if you don't have the right metadata. So I think, sorry, I just kind of came in, No. But this also shows why it is important to have the right kind of metadata. Yes. Sorry, go ahead, Rupa. Yeah, thank you. And जो लोग ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपको ये पता ही होगा, तो जो शीट आता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसमें ISRC का एक काइंड ऑफ कॉलम होता है या एक जगह होता है जहाँ आपको ISRC मेंशन करना पड़ता है. बट ये प्रॉब्लम आर्टिस्ट के साथ है कि आपको पता नहीं ISRC क्या है, ISRC कहाँ से लाना है. तो काफी टाइम क्या होता है, काफी समय क्या होता है, आपके डिस्ट्रीब्यूटर ही आपको ISRC दिलाता है कि उनके पास ISRC होता है, तो आपके गाने का जो ISRC है वो आपको डिस्ट्रीब्यूटर से ही मिल जाता है, एंड यू पुट दैट ISRC जब वो सॉन्ग अपलोड हो रहा है. जैसे सुरित सर ने बताया, ISRC के बिना वो गाना आपका स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में जाएगा ही नहीं. द सॉन्ग कैन नॉट गो ऑन द स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म विदाउट ISRC. तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपको दिला देता है ISRC इफ यू कैन नॉट गेट इट ऑन योर ओन. But there is one thing, there is a body called IMI, and we always tell you as an artist, get your own ISRC. हम लोग इसको लेके बाद में एक डिटेल्ड एक सेशन करेंगे ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल. बट यहाँ पर वी जस्ट वांट टू टच अपॉन, क्योंकि हम लोग डेटा के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर आपका खुद का ISRC हो दैट इज बेस्ट. तो ISRC है साउंड रिकॉर्डिंग के साथ, वो साउंड रिकॉर्डिंग का आइडेंटिफायर है. सर ने और एक चीज बताया, ISWC, वन मोर फॉर ISWC. तो दिस सॉन्ग बिजनेस जो मैंने बताया इस बहुत यूनिक है, क्योंकि एक है साउंड रिकॉर्डिंग, उसका पैसा बन रहा है, और जब साउंड रिकॉर्डिंग का पैसा बन रहा है उसके साथ और एक चीज का भी पैसा बन रहा है, वो है लिरिक्स और कंपोजिशन, एंड वो है म्यूजिक पब्लिशिंग. तो एक गाने का दो पिलर है, दो काइंड ऑफ लाइक देयर आर टू थिंग्स टू अ सॉन्ग, साउंड रिकॉर्डिंग, एक पब्लिशिंग. तो जैसा आप ISRC से आप एक साउंड रिकॉर्डिंग को पहचान रहे हैं, वैसे ही जो ISWC है उससे आप लिरिक्स और कंपोजिशन को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. और सर ने और एक चीज बताया, IPI नंबर. आप जब कोई सोसाइटी के साथ जुड़ते हैं तो आपके नाम के साथ एक IPI नंबर होता है, जो आपके आधार नंबर है एज अ क्रिएटर. आप जो ऑथर कंपोजर हो या पब्लिशर हो, वो IPI नंबर इज लाइक योर आधार नंबर. जैसा सर ने बताया, एक नाम काफी लोगों का सेम नेम हो सकता है, एक ही नाम हो सकता है, लेकिन one person will not have the same name and the same IPI. सेम नेम सेम IPI कभी नहीं होगा, जैसा हमारा सेम नेम और सेम आधार नंबर नहीं होता है. तो जब आप वो डेटा भरते हैं IPRS में, आप देखेंगे आपका नाम आएगा, उसके साथ IPI नंबर आएगा, so that there is no mistake in connecting to the right person when we are distributing the royalty. एक मेटाडेटा में एक गाने का अगर मेरे पास पब्लिशर का भी IPI है, ऑथर का भी IPI है और कंपोजर की भी IPI है, तब वो डेटा वो जब सीजैक में जाता है उससे आपका ISWC नंबर जनरेट होता है. इसका क्या बेनिफिट है, एक गाने का मल्टीपल साउंड रिकॉर्डिंग हो सकता है कि एक गाने का 3-4 ISRC हो, लेकिन लिरिक्स और कंपोजिशन सेम है. तो ये 4 ISRC कैसे सेम लिरिक्स और कंपोजिशन के साथ जुड़ेगा, वो पॉसिबल होता है ISWC नंबर से. तो ये ISWC नंबर जाके लिंक हो जाएगा वो 4 ISRC से, और जितना साउंड रिकॉर्डिंग हो, ऑथर कंपोजर को रॉयल्टी मिस ना हो, यही ISWC इंश्योर करता है. वही है इम्पोर्टेंस ISWC का. सर नाउ हेल्प अस अंडरस्टैंड, हमने तो ये समझ लिया
हम जब आईपीआरएस में डेटा सबमिट करते हैं, कौन कौन सा फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम मिस कर ही नहीं सकते? So that's another very interesting question because there's a lot of discussion which is went ahead on this matter. So we have got around 15, 16 fields, you know, and as far as I am concerned, I think each one of them is extremely important. For example, let us take, for example, the title. I mean, without the title, you cannot even identify the song. Take the name of the creator. Without the name of the creator, how will the credits flow back? Take ISWC. And I think we have already expanded enough on the importance of ISWC. Take ISRC. By the way, ISRCs are not expected to be submitted by the creators. ISRCs are expected to be submitted by the publishers or the labels because they are the one who generate that. Okay? Then let's talk about the duration of the song. You might say why duration is important. Duration becomes important because it might be a particular song might have the same name. However, if that particular song is playing for 8 minutes and same name song is got a playing time of 3 minutes, it is an easier way for us to identify, hey, you know what, this might be another song, and the credits for this song should go to another set of creators and not other set of creators. If we also take something which we call the validation link. Why the validation link is important? Because that validation link has got two purposes. Purpose one, it allows me to say, hey, this song, the creators of this song are A, B, and C. Okay. Because what is the validation link? It's basically a, let's say, a Spotify link or a YouTube link, where if you click on that, you will see the song name is this, and they give, let's come back to that word metadata again. If you click on that YouTube link, what do you see are the metadata of that particular song, right? I'm sure the creators here would have seen that. Their name is there, the name of the performers are there, and stuff like that. When we register the work and we match the work, a very important role is matching the work so that I can claim for this particular track. Each set of metadata helps us to match with the right track. So the validation link tells us, okay, though the song name might be the same, the creator for this song are ABC. Validation link also says ABC. We know, okay, we are doing the right registration. If it is DEF, ideally speaking, we might not actually register that song. We'll say, hey, you know what? There might be some fraudulent activity there. Rumpa, mark my words, I use a very strong word, fraudulent. Yeah. Reason being, so that nobody can steal your identity. It is your track. This is the publicly you're saying that this is my track, I'm the creator. If you don't give that particular validation link and somebody else comes and claims this is my song, there is no way we can prove that no, the song belongs to Rumpa and not to X. So you know what, Rumpa, I can go on because you see, as you know, this is my passion. Talking about data, I can go on talking about it. But let me assure you, we have given a lot of thought, and whatever fields we have kept in the bulk upload format or in the portal for single registration, each one of them is extremely important, without which the right kind of registration might not be possible. Yes. So Surhit sir, if you remember, there is a saying that more the merrier. So that is very much applicable in terms of metadata because It is. No, I'll give you, Rumpa, you are very right. You are very right. But trust me when I say, when we say more, we have kept this more to the bare minimum. Let me assure you that. Because we do understand that, creation of the metadata is a hassle for the creators, right? So we take only that much that is required. And if you see also today's world is revolving around digital, which means it is completely faceless. Okay. Now, if it is a faceless world, in that case, how do I identify a particular track from millions of others which are there? There, these data points, each of the data point plays a crucial role in saying, okay, when you match, uh, sorry, I was almost going to give a mathematical example, but anyway, I'm not going there. But see, it's a very simple thing. When you have a dot, you can go anywhere, right? When you have two dots, it can only be a straight line.
when you have three dots, it ensures that the straight line moves in a particular direction. So to give you this example, more number of data points, and we had assured you the bare minimum helps us to identify and claim for your. It is all for your benefit, Rumpa. I can assure you for that. Right. Sir, I want to add something here. I want to make it a bit kind of like not so serious, but थोड़ा in terms of humor. थोड़ा इसमें मैं अगर ऐसे बात करूँ इसका कि सपोज आज कोई आपको बोले कि मुझे आपको एक खजाना भेजना है आपके में आई वेंट टू योर तो मैं आपके गांव से हूँ और मैं आपके जो पुराना जो हवेली है मैं वहां गई थी और वहां पर मुझे कुछ खजाना मिला जो मुझे आपको बॉम्बे में या दिल्ली में या मेरठ में आपको भेजना है क्योंकि ये मैं मेरे साथ रख नहीं सकती और ये कुछ कीमती ज्वेलरी है जो मुझे भेजना है और अभी तो गोल्ड का इतना प्राइस हो गया है कुछ गोल्ड ज्वेलरी है जो आपके दादी माँ के हाँ तो आप मुझे आपका एड्रेस भेजिए अगर आप सोचिए कि अगर ऐसा एक सिचुएशन है जहां पर आपको कोई गोल्ड ज्वेलरी मिलेगा और किसी ने आपसे वो एड्रेस मांगा है कि आपका घर का एड्रेस तो आप क्या करोगे आप क्या सिर्फ एक लाइन एड्रेस भेजोगे उसको आई डोंट थिंक आप ऐसा नहीं करोगे आप जितना डिटेल में हो आप उनको एड्रेस भेजोगे आप उसमें शायद 3-4 फोन नंबर भी डाल दोगे कि अगर मुझे नहीं मिला तो इसको फोन करो उसको नहीं मिला तो इसको फोन करो घर के सामने ये है घर के बाहर ये है करके आप उनको जितना पॉसिबल आपको गाइड करना है आप करोगे क्योंकि यू डोंट वांट टू लूज दैट आपको चाहिए वो खजाना ये मेटा डेटा का भी आईपीआरएस का जो हम लोग बात कर रहे हैं ये भी एकदम सेम है क्योंकि ये जो रॉयल्टी है ये भी खजाना है और ये रॉयल्टी आप तक तभी पहुंच सकता है जब आपका ये एड्रेस ठीक हो आपका ये डेटा ठीक हो अगर डेटा में गड़बड़ है तो आपका खजाना आप तक नहीं पहुंचेगा वही सुरित सर बार बार आपको बता रहे हैं कि आपको शायद फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम आप जब कर रहे हो आपको लगेगा कि वो इतने सादा फील्ड्स क्यों है इतने सारे डिफिकल्ट सब टर्म्स क्यों है कैसे मैं करूं कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आ रहा है लाइव सेशन में जहां पर आप हमें पूछ रहे हो कि कैसे अपलोड करना है सॉन्ग कैसे रजिस्टर करना है सॉन्ग उसका एक प्रोसेस है उसका हमारा रेगुलर ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन होता है Rumpa, before you go ahead, you gave a beautiful example. See, what you asked for to begin with, you said address chahiye, right? Is your phone number a part of your address? Never, right? In a normal sense, you would not ever give their phone number. But the moment you say it's a very kimchi cheese, what you do, you go out of your way and provide more identifiers so that the thing does reach you. It does not go anywhere else. So when you talk about this, when you talk about something kimchi, I think it is very important for us to think what else we can add to it so that it does definitely reaches the person for which it is required. Very true, very true. और सर the documentation team under your guidance, आपके guidance पे documentation team हर हफ्ते 2 दिन Tuesday और Friday हमारा online training session होता है अगर आपके पास टाइम नहीं है या आपको समझ में नहीं आ रहा है आप बिजी हो तो आपके घर में भी जो है आप उनको भी आप एनकरेज कीजिए कि वो सीख ले उसको किसी भी तरह डेटा आपको सबमिट करना ही है आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते आपको डेटा सबमिट करना पड़ेगा हमारा ट्रेनिंग सेशन अटेंड कीजिए और आईपीआरएस ने हेल्प डेस्क भी शुरू किया है लाइव हेल्प डेस्क कि आप ऑफिस में आके भी आप सीख सकते हैं तो हमारा 2 महीने स्टार्टेड अप्रैल में हम लोग शुरू किए थे अप्रैल मई में हमें बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिला अभी कम हो गया है आप उसमें भी आप स्लॉट बुक कीजिए आप हमारे ऑफिस आइए हम आपको हेल्प करेंगे कैसे डेटा रजिस्टर करना है हम आपको हैंड होल्ड करेंगे आपको सिखाएंगे डेटा रजिस्ट्रेशन कैसे होता है सो ये इनिशियली आपको वो डिफिकल्ट होगा लेकिन आप जब करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे ये उतना भी कुछ उतना भी डिफिकल्ट नहीं है अगर आप सोचोगे कि रॉयल्टी है इसके साथ रॉयल्टी जुड़ा है क्योंकि हमारे सर आज हमारा ये मेटा डेटा का सेशन हो रहा है लेकिन ऑलरेडी रॉयल्टी का क्वेश्चन आना शुरू हो गया कि मुझे रॉयल्टी कैसे मिलेगा रॉयल्टी तभी मिलेगा जब आपका डेटा परफेक्ट हो आप गाना रजिस्टर करते हो हमारे डेटाबेस में अभी हमने रिसेंटली 2 हफ्ते पहले एक हमने स्टडी किया
हमारा डेटाबेस में, तो हमने देखा कि 3,500 के ऊपर मेंबर्स जो लास्ट 2 साल में जुड़े हैं हमसे, उन्होंने रजिस्ट्रेशन के बाद गाना रजिस्टर ही नहीं किया आईपीआरएस में। तो अगर आप गाना रजिस्टर नहीं करोगे आईपीआरएस में, तो आपका रॉयल्टी कैसे बनेगा, क्लेम कैसे होगा, हम कैसे आपको रॉयल्टी दिलाएंगे? तो इसलिए हम लोग फर्स्ट सेशन डेटा के ऊपर ही कर रहे हैं। आपके जो रॉयल्टी के क्वेश्चन है वो हम लोग ने नोट कर लिए हैं। हमारा नेक्स्ट मंथ जो सेशन होगा वो रॉयल्टीज के ऊपर होगा, और वहां पर हम लोग रॉयल्टी के जो बारे में जो क्वेश्चन है वो आंसर करेंगे। लाइसेंसिंग का भी कुछ क्वेश्चन आ रहा है, वो हम लोग लाइसेंसिंग की जो सेशन होगा उसमें डिस्कस करेंगे। आज का सेशन है मेटा डेटा के ऊपर। मेटा डेटा इज द स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से ही सब होता है। लाइसेंसिंग भी वही गाने का होगा जो रजिस्टर्ड है। तो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होता है, डेटा, लाइसेंसिंग, रॉयल्टी। तो इसलिए डेटा को अच्छे से समझिए। सर, देयर इज वन क्वेश्चन व्हिच आई वांट टू आस्क, बिकॉज़ आई नो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है अभी। आईपीआरएस में डेटा रजिस्ट्रेशन करने का बेनिफिट क्या है? As an artist, हम तो we are giving the data to the distributor. We are giving the data to the distributor. I'm giving the data to the distributor. But I also have to register the data in IPRS. और सिर्फ रॉयल्टी नहीं, आईपीआरएस में डेटा जब हम रजिस्टर करते हैं कोई भी कॉपीराइट सोसाइटी में, बिकॉज सर ये क्वेश्चन में क्यों आपको पूछ रही हूँ, क्योंकि whenever we talk about IPRS, the first thing that comes to mind is royalties. कि आईपीआरएस में ज्वाइन करो कि आपको रॉयल्टी मिले, बट इट इज नॉट ओनली रॉयल्टी। आप जब आईपीआरएस ज्वाइन करते हैं तो आपका डेटा भी आप रजिस्टर करते हो, तो उसका बेनिफिट क्या है, और व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू ज्वाइन अ सोसाइटी एंड रजिस्टर योर वर्क इन अ सोसाइटी? I don't know. There is nothing comparable to what I'm going to say now in English. I think we have a saying that after you go through the entire Ramayana, then you ask who's Sita, kind of. So let's say the mother of all these data that you're talking of is IPRS. See that at the level of IPRS, who's going to collect your royalty? Who's going to collect your royalty? It is IPRS who's going to collect your royalty. You can give it to any distributor anywhere. This money has to come to IPRS. Okay. Now let me give you another example. I mentioned, right? Your song might be playing in Trinidad. Your song might be playing anywhere in the world. So if you do that, which means, is it possible for an individual composer or a creator to kind of see what music is playing in Trinidad? No. What music is playing in Timbuktu? No. All right. So how do you do that? So as a society, we have reciprocal agreements with all the major societies across the world. And when your music gets played somewhere in Timbuktu, Trinidad, Bogota, you name any place, there will be a society there who will be tracking your usage there. And they in turn will send the credit. And I don't want to talk about royalty all the time. Let us talk about the recognition part. The recognition is you being famous, recognition also about royalty. But more important is, even if your music is playing anywhere, any corner of the world, it is the job of that particular society to kind of recognize that and send it back to IPRS, saying, you know what, your members' data is being utilized there, and this is the recognition for that particular member. So this global reach, forget India. I mean, of course, I think the creators here who have joined it, they already know the role IPRS plays in India. But IPRS is not only limited to India because it's on the global reach. Across the world, this data will play an important role, being a member of IPRS. Right. No, very important. और एक चीज जो important और भी है, sorry sir, that as an artist, like a songwriter or a composer, when I'm like sharing my data with my distributor, ये गलती बहुत बार होता है. Distributor IPRS में data register नहीं करता है. So आपको separately you have to join IPRS, आपको IPRS का member बनना पड़ता है, और आपको ये गाना IPRS को रजिस्टर करना इम्पोर्टेंट है. डिस्ट्रीब्यूटिंग प्लेटफॉर्म से या डिस्ट्रीब्यूटर से या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से ऑटोमेटिकली डेटा IPRS में नहीं आता है. ये गलत फहमी है कि अगर गाना है प्लेटफॉर्म पे तो वो ऑटोमेटिकली IPRS में भी रजिस्टर हो जाएगा. ऐसा नहीं होता है. या
ऐसे जाके नहीं करता है। और एक चीज कि अगर आप कोई लेबल के साथ पब्लिशर के साथ काम कर रहे हो, आपका पब्लिशर आपके बिहाफ पे और या आपके तरफ से वो डेटा रजिस्टर कर सकता है। तो अगर आप करते हो या आपके या पब्लिशर करता है, लेकिन डेटा आईपीआरएस में रजिस्टर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक क्वेश्चन है, आई थिंक आपको अभी जाना पड़ेगा। एक लास्ट क्वेश्चन है कि बैकग्राउंड स्कोर का भी डेटा रजिस्टर करना पड़ता है और उस पर रॉयल्टी बनता है? 200%. Specifically, when you talk from the perspective of India, India is still a land of movies, the land of dreams, right? And there are very, very talented people who create this background score. And they obviously have the rights to receive recognition for those background scores they have created. So we only talked about movies. It's not movies. It's talked about, today we have these soap operas across the world. There are so many, serials, episodes, and all of them are creating music. Many of these music is also being used in different platforms. Once you have that, then it's the common thing that how do I know my music is being exploited or being used anywhere? The only way to do that is if your music is registered with IPRS. So be it feature music, be it background music, does not matter. It needs to be registered. One. Now, when we talk about background music, the way we want to register it, because background music usually is a part of a television series or or a movie series or something like that. So 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 what we call, there is a concept called Q sheet. There is a concept called Q sheet, and we use that particular format of Q sheet for registering the works in IPRS. Again, Rupa, as you mentioned, there is this training we conduct every week. Anybody who is a background core creator, let them attend this particular. Yeah. So let them attend this particular training session, and we will explain how to kind of register the background scores. Okay, great. It is important that it is important to register your background scores as well. Okay, so like तो जैसे गाने के ऊपर आपका रॉयल्टी बन रहा है, द वे रॉयल्टीज आर मेड ऑन योर सॉन्ग्स एंड यू नीड टू सबमिट द सॉन्ग डेटा। और जैसे सॉन्ग का मेटा डेटा सबमिट करते हैं, बैकग्राउंड स्कोर इज ऑल्सो अ वेरी बहुत बड़ा एक जगह है जहां से आप पैसा बना सकते हैं, और उसका भी एक अलग फॉर्मेट होता है डेटा सबमिशन का। इस सब का ट्रेनिंग आईपीआरएस में होता है, ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है। तो प्लीज आप गाना रजिस्टर कीजिए, वो बंद मत कीजिए। डिफिकल्ट है तो यू आईपीआरएस के पास आइए, हम आपको हेल्प करेंगे, पर गाना रजिस्टर करना बंद मत कीजिए। सर, वन लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक क्वेश्चन है इसका। Maybe this will be the last question. I need to rush. Please go ahead. जस्ट 1 मिनट सर। अगर मैंने डेटा सबमिट कर दिया है और उसमें कुछ करेक्शन करना है, वो कैसे करना है? Okay. I think our members know that we have now created these portals which empowers them. There's a very transparent way where they can see all their works, they can look at their profile, their bank details and stuff like that. Okay. Now, however, we have also seen people kind of going and making corrections in the tracks which is already registered. Let's say it's registered a publisher, somebody goes in and makes a correction, which is a wrong correction that they have made. So what we have done, we have now closed that part. We have said, no. If you want to make a correction, please write to us. There's a documentation at IPRS.org. Send the metadata to us, send your corrected data to us, and we will do the correction immediately and let you know. And you will see if the correction is a valid correction, you will definitely see that correction reflected in that metadata immediately within a 24 hours to 48 hours. Okay, wonderful. So Rishi, please help to put this documentation at IPRS.org in the chat so that everybody can सब वहां से लिख सकते हैं कौन सा email ID है. Thank you so much, Surhit sir. It was really kind of a start of a enlightening journey. बहुत ही हमें help हुआ आज. लेकिन what I think, हमें जो लग रहा है कि हमें और एक सेशन करना पड़ेगा आपके साथ, because काफी सारे questions अभी भी है जो हमें discuss करना है. So आपको जब भी टाइम मिले सर, एंड वी विल इन्फॉर्म ऑल आवर आर्टिस्ट एंड मेंबर्स कि हमारा सेकंड फेज 2 सेशन ऑन डेटा रजिस्ट्रेशन एंड डेटा मैनेजमेंट. थैंक यू सो मच. And I will ensure next time that I have free time where I can, like at one place, I'm very, very sorry, profusely sorry for, kind of moving around and, taking the call like this. Please understand that, I had to rush for an emergency. This is very important. I really wanted to do this session in a more peaceful fashion, perhaps. Please excuse me. I'm very, very sorry for that. I would look forward to another session.
Thank you so sir. much. Thank you so much. Thank you. And Bye. thank Bye, you all. everybody. Bye, sir, and have a safe journey. Thank you. And thank you all our like audience and members and artists today who have joined this session. We really appreciate the interest that you are taking to understand metadata, understand the data registration process and why it is important. सबको बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया ये सेशन ज्वाइन करने के लिए बिकॉज डेटा हाँ देखने में बहुत बोरिंग है. आप जो काम करते हैं क्रिएशन वो तो कुछ अलग ही चीज है, वो तो गॉड गिफ्टेड है. पर डेटा हाँ थोड़ा बोरिंग है लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंड में तो पैसा बनाना है गाने के ऊपर. और बहुत सारे इट्स एक्चुअली कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू कि आज आप ये इंटरेस्ट ले रहे हैं ये समझने के लिए और एफर्ट ले रहे हैं कि आईपीआरएस आपको मदद कर सके क्योंकि अभी सब कुछ डिजिटल है, सब ऑनलाइन है. तो अगर आप इस चीज को सीख लेंगे तो ये हमारे लिए भी बेनिफिट है, आपके लिए भी बेनिफिट है. और हम लोग चाहते हैं आईपीआरएस में कि हम लोग आपको जितना पॉसिबल आपको हेल्प कर सके और आपके गाने से आपका जो रॉयल्टी है वो आपको हम दिला सके. थैंक यू सो मच. हम लोग फिर आएंगे अगले महीने, हम लोग आएंगे रॉयल्टी के ऊपर सेशन लेके. तो तैयार रहिए और जुड़िए हमारे साथ हमारे ये सब सेशंस में. थैंक यू, शुक्रिया.